Just keep silent for 30 seconds and pray to your Lord. Come. Can slide with you. सबसे पहले थोड़ी सी गाइडलाइंस देखते हैं, फिर उसके बाद स्कीम्स को करेंगे. So on micro and small enterprises, loans given to micro and small enterprises, no collateral security for loans up to rupees 10 lakhs. 10 लाख रुपए तक दिए गए लोन्स पर कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है. In case of micro and small enterprises, no collateral for loans up to rupees 10 lakhs. And in case of good track record, that means the person has taken a loan earlier, repayment done in time, no collateral for loans up to rupees 25 lakhs. No collateral for loans up to rupees 25 lakhs. और अगर लोन्स CGTMSE से गारंटेड हों, in case of loans guaranteed by CGTMSE, no collateral security for loans up to rupees 500 lakhs. 500 lakhs. Now CGTMSE guarantee is provided up to rupees 5 crores. Therefore, this limit has been kept up to rupees 500 lakhs. 500 lakhs. Please do not write anything in chat. General comments, please. You can do that once we are towards the end of the class, but not now. Let's look at TKA Nair committee recommendations. TKA Nair committee recommendations. So task force on micro, small and medium enterprises was headed by Shri PK Nair. This was Prime Minister's task force on micro, small and medium enterprises. This was headed by Shri PK Nair. He gave 3 recommendations. First is yearly growth in credit, यानी कि amount of loan, हर साल दिए गए amount of loan में जो growth होनी चाहिए for micro and small enterprises, yearly growth in credit to micro and small enterprises should be 20%. Should be 20%. Yearly growth in the outstanding loan for micro and small enterprises should be 20%. Then yearly growth in number of micro enterprise accounts. Yearly growth in number of micro enterprise accounts. यहां पर सिर्फ माइक्रो है और यहां पर नंबर है. जितने लोन खाते उनके खोलेंगे हर साल, वो कितने से बढ़ने चाहिए? 10%. They should grow by 10%. Then whatever was the lending which was done to micro and small enterprises in the previous year, 60% of that should be done to micro enterprises in the current year. जो पिछले साल में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जितना लेंडिंग किया था, एक बैंक को उसका कम से कम 60% आने वाले साल में माइक्रो एंटरप्राइजेस को देना है. So 60% of total lending to micro and small enterprises, 60% of total lending to micro and small enterprises of the previous year to be given to micro enterprises, to be given to micro enterprises in the current year, in the current year. इसके बाद 4C approach की बात करते हैं. 4C approach was suggested by Ganguly committee
It was suggested by Ganguly Committee. And cluster approach for financing micro and small enterprises was also suggested by Ganguly Committee. Cluster approach भी Ganguly Committee ने बताया था उसके बारे में. Now let's talk about Mudra. Full form of Mudra is Micro Units Development Refinance Agency. Micro Units Development and Refinance Agency. Micro Units Development and Refinance Agency. जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. This scheme, Mudra scheme, was launched by Honorable Prime Minister on 8th April 2015. On 8th April 2015. Mudra is a wholly owned subsidiary of SIDBI. It is a wholly owned subsidiary of SIDBI. Now let's come to what is a Mudra loan. Mudra loan है क्या? सबसे पहले non-agricultural advances रखे गए. All non-agricultural advances which were granted on or after 8th April 2015 up to rupees 10 lakhs, they were counted as Mudra loans. Okay. What is a Mudra loan? All non-agricultural advances on or after 8th April 2015, on or after 8th April 2015, कितने तक के? Up to rupees 10 lakhs. Up to rupees 10 lakhs. This year, the budget has proposed that in Tarun category, if the first loan has been repaid, then the borrower can get next loan of 20 lakh rupees. तो उसे 20 लाख रुपए का अगला लोन दिया जा सकता है. However, this has not been notified till now by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. And I have not seen it as a part of any of the bank circulars also. If in case any of your banks have notified, you can let us know. We have checked 3-4 banks. It has not been notified for 20 lakh rupees how the scheme will operate. But I'm just telling you what is the change. Change is कि तरुण के अंदर अगर 10 लाख रुपए का लोन उसने रीपे कर दिया है तो उसे नेक्स्ट डोज में 20 लाख रुपीस तक का लोन दे सकते हैं. That is a proposal. Next is loan for activities allied to agriculture. पहले नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस थे, बट एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर जो हमने पहले देखा, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो चीजें. लोन अप टू रुपीज 10 lakhs. Loan up to rupees 10 lakhs will be called as Mudra loan. Then overdraft under PMJDY up to rupees 10,000. प्रधानमंत्री जनधन योजना में दिया गया 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट, वो भी मुद्रा लोन में काउंट होगा. मुद्रा लोन में there are 3 schemes: Shishu, Kishore and Tarun. Shishu, Kishore and Tarun. Shishu loans, loan amount up to rupees 50,000. Shishu loans up to rupees 50,000. Loans up to rupees 50,000. Kishore loans more than 50,000. That means loans from 50,001 and up to rupees 5 lakh. 50,001 and up to rupees 5 lakhs. And Tarun loans more than rupees 5 lakhs, loans above rupees 5 lakhs and up to rupees 10 lakhs and up to rupees 10 lakhs. Up to rupees 10 lakhs. There is one more condition. मुद्रा में जितने लोन्स दिए जाएंगे उसमें से कम 60% लोन्स शुड बी इन शिशु कैटेगरी. कम से कम 60% लोन शिशु कैटेगरी में होने चाहिए. एटलीस्ट 60% of the credit
should be in Shishu category. At least 60% of credit should flow to Shishu category units. Shishu category units. Margin कितना होगा? Margin is bank discretion. Margin has been left to bank discretion. Different banks have prescribed different norms for bank margin. Generally, loans above rupees 2 lakhs, the margin will be minimum 5%. I was referring to one of the banks, their loan schemes. They said कि शिशु पर 5%, किशोर पर उन्होंने 10% रखा हुआ है, तरुण पर 15% रखा हुआ है. तो आपके अपने बैंक का जो मार्जिन होगा वो that is what you have to really look at here. Repayment period for a Mudra loan. Repayment is again bank discretion. Repayment is again upon bank discretion. Generally, it is 7 years, which includes a moratorium period of 3 months. However, you can check about your bank, whatever is the repayment period for your bank. Mudra card can be issued for rupees 20,000. Mudra card can be issued for 20,000 rupees. Refinance corpus of Mudra is 20,000 crores. 20,000 crores. और मुद्रा के लोन्स की गारंटी कौन करता है? मुद्रा के लोन्स की गारंटी कैन बी डन बाय CGFMU और CGTMS. The loans can be guaranteed by CGFMU or CGTMSC. However, now government has made it very clear that the loans should be guaranteed more and more by CGFMU rather than CGTMSC. So therefore, this inclination is more towards CGFMU. Let's go ahead. Let's look at the credit guarantee scheme for Mudra loans. CGFMU scheme की बात करते हैं. CGFMU, the full form for CGFMU is Credit Guarantee Fund for Micro Units. Credit Guarantee Fund for Micro Units. Credit Guarantee Fund for Micro Units. This is operated by NCGTC. It is operated by NCGTC, National Credit Guarantee Trustee Company Limited. Trustee Company Limited. National Credit Guarantee Trustee Company Limited. Trustee Company Limited. What type of loans will CGFMU guarantee? All type of Mudra loans, loans sanctioned under Mudra scheme, and loans given to self-help group and micro joint liability groups. Loans given to self-help groups and micro joint liability groups. Micro joint liability groups. Amount of coverage. Amount of coverage. Maximum rupees 10 lakhs. Maximum rupees 10 lakhs per borrower. Maximum rupees 10 lakhs per borrower. In case of self-help group, above rupees 10 lakhs and up to rupees 20 lakhs. Self-help group को दिए गए लोन्स में 10 लाख से ज्यादा और 20 लाख रुपए तक के लोन कवर किए जाएंगे. And overdraft under PMJDY scheme. Overdraft under PMJDY scheme up to rupees 10,000. Up to rupees 10,000. Up to rupees 10,000. Guarantee fees कितना होगा? Guarantee fees will be standard rate plus risk premium. Standard rate plus risk premium. Standard rate is normally, the normal rate for standard rate is 1% per annum. 1% per annum. This will be sanctioned amount in the first year and for loan outstanding in the second year and onwards. ये जो 1% per annum लगेगा, ये पहले साल में sanction amount में और आने वाले सालों में outstanding amount पर लगाया जाएगा. Self-help group के केस में, in case of self-help groups, it will be 0.25% in first year, 0.2% in first year,
and 0.50%, 0.50% from second year and onwards. From second year and onwards. From second year and onwards. How much will be the guarantee cover? Guarantee का cover कितना होगा? For first 3% of amount in default, for first 3% of amount in default, it will be borne by the bank. It will be borne by the bank. It will be borne by the bank. तो पहला 3% जितना भी अमाउंट इन डिफॉल्ट होगा वो पूरा का पूरा बैंक को बियर करना पड़ेगा, उस पर कोई गारंटी कवर नहीं है. फॉर बैलेंस 75%. 75% of over and above 3% will be settled by the fund. 75% of over and above 3% shall be settled by the fund. उसे फंड सेटल करेगा. ये जहां फर्स्ट 3% था, यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन्स में ये कंडीशन नहीं लगती है. सो नो फर्स्ट लॉस. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉस. No first loss in case of self-help groups. In case of self-help groups, no first loss. So the entire 100%, 75% cover will be provided in case of self-help groups. What is amount in default? Amount in default क्या है? Remained NPA for more than 6 months. 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 Time limit for fees payment. कितने समय में फीस जमा करानी होगी? In case of base year, within 3 days from credit guarantee demand advance notice. From credit guarantee demand advance notice. From credit guarantee demand advance notice, or 16 days from end of quarter, whichever is earlier. Subsequent years में it is paid on or before 31st August. First year में तो within 3 days from the demand notice or 16 days from the end of quarter, whichever is earlier. From next year and onwards by 31st August. So the credit guarantee fees has to be paid by 31st August. Claim payment period is 60 days. Claim payment period is 60 days. Claim payment period is 60 days. And CGFMU का गारंटी कवरेज पोर्टल है सर्च. गारंटी की क्लेम्स कहां फाइल किए जाएंगे? सर्च पोर्टल. सर्च. एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि इसमें 3% नहीं समझ आया. 3% का मतलब ये आपने 100 रुपीज का आपने आपका लॉस जो है, जो अमाउंट इन डिफॉल्ट है, अगर आपका अमाउंट इन डिफॉल्ट 100 रुपीज का है तो उसके अंदर से फर्स्ट 3 रुपीज ये बैंक को बियर करने पड़ेंगे एंड द बैलेंस 97 इस 5% CGFMU पे करेगा. इसका 75% CGFMU कवर करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ फिगर्स. General credit card facility. General credit card facility. Flow of credit to individuals or entities. Flow of credit to individuals or entities in the non-farm sector. Non-farm sector. Non-farm sector. Which is eligible for
priority sector classification, which is eligible for priority sector classification. And what kind of credit will it be? Working capital credit. Working capital credit. Working capital credit. पहले ये general credit card facility used to exist in debit cards and credit cards. Last year there was change which was done. Now it can be given only in form of credit cards. And earlier there were only individuals where this could have been given. Now this word entities is also mentioned here. यहाँ पर entities को भी include किया गया है. Credit will be given in the form of credit cards. Credit will be given in the form of credit cards. And quantum of credit limit, there is no limit. There is no limit on the quantum of credit. It can be a need-based loan. It can be a need-based loan. It can be a need-based loan. Thank you. Let's look at Stand Up India. Stand Up India. It is a scheme for financing women and SC/ST population for putting up new projects which are being put up for the first time. जो projects वो पहली बार लगाएं, women या SC/ST, women या SC/ST entrepreneurs, greenfield projects कराते हैं वो, उनकी financing के लिए Stand Up India बनाया गया. The scheme was launched on 5th April. The scheme was launched on 5th April 2016. The scheme was launched on 5th April 2016. The scheme's objective is to develop entrepreneurship in SC/ST and women. To develop entrepreneurship in SC/ST and women. Loan amount can be between 10 lakh rupees and 1 crore. Between 10 lakhs to 1 crore. Between 10 lakhs to 1 crore. Target, हर बैंक की हर ब्रांच को एक साल में कम से कम एक विमेन को और एक SC/ST बेनिफिशियरी को स्टैंड अप इंडिया अकाउंट खोलना होगा. स्टैंड अप इंडिया अकाउंट खोलना होगा. So at least one SC/ST beneficiary, and one woman beneficiary per branch per financial year. For setting up of greenfield enterprise. और greenfield enterprise क्या है? जो एंटरप्राइज एक एंटिटी एक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट टाइम लगाए. इट इज द फर्स्ट टाइम वेंचर. ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज. Type of enterprises can be manufacturing enterprise, service enterprise, allied activities for agriculture or trading kind of activities. अब बात आती है अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस. इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, at least 51% of shareholding, and controlling stake should be held by SC/ST or women entrepreneurs. In case of non-individual enterprise, at least 51% of shareholding and controlling stake must be held by SC/ST or women entrepreneur. Margin is specified as 15%. However, if the borrower has worked with some other scheme to get the margin financed, किसी और स्कीम में अपना मार्जिन फाइनेंस करवा रहा है, तो भी मिनिमम मार्जिन 10% लाना होगा. Minimum 10% तब भी लाना होगा. The prescribed margin is 15%, but if the scheme
is operating in coexistence with some other scheme for financing or funding of margin, still the borrower has to bring minimum 10% of margin. Minimum 10% of margin. Maximum interest rate that can be charged. EBLR or RLLR. External benchmark linked lending rate or repo linked lending rate plus 3% plus 3% plus tenor premium plus tenor premium plus tenor premium. Repayment period up to 7 years. Up to 7 years. Up to 7 years. With moratorium period up to 18 months. With moratorium period up to 18 months. With moratorium period up to 18 months. Moratorium period up to 18 months. After Stand Up India, let's look at Swanidhi scheme. Swanidhi. Swanidhi का full form है PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi. 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 Eligible borrowers. Eligible borrowers. All street vendors in urban areas. The scheme was brought primarily during the time when there was a lockdown due to COVID. उसके बाद street vendors villages से urban areas में वापस आए, so they could not start their business. They needed small capital to start business. Working capital चाहिए थी. Therefore, a credit facility of 10,000 rupees was introduced, which was introduced as working capital term loan. Working capital के लिए term loan दिया जाता था 1 साल के लिए. तो उस पे कंडीशन थी कि जो लोग जिस दिन लॉकडाउन लगा था उससे पहले टाउन वेंडिंग करते हैं, बट अब वो कंडीशन नहीं है. So all street vendors in urban areas, they will be identified by certificate of vending. They will be identified by certificate of vending or ID card issued by urban local bodies, or they will be identified in the survey, Scheme is valid till 31st December 2024. Scheme is valid till 31st December 2024. Corpus of the scheme is 8,100 crores, 8,100 crores. Type of facility, working capital term loan. Working capital term. Working capital needs के लिए term loan दिया जाएगा. स्कीम में मार्जिन कितना लेना है? कोई मार्जिन नहीं लेना. नो मार्जिन, नील. नो कोलैटरल. उद्यम रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड. उद्यम रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड. नो अपर एज लिमिट. नो अपर एज लिमिट. एज लिमिट नहीं है. नो प्रीपेमेंट पेनल्टी. नो प्रीपेमेंट पेनल्टी. नो प्रीपेमेंट पेनल्टी. No prepayment penalty. No prepayment penalty. Loan will be given in 3 stages. Loan will be given in 3 stages. First stage पे amount of loan will be 10,000 rupees. First stage पे amount of loan will be rupees 10,000. And repayment period 12 monthly installments. Repayment period is 1 year, payable in monthly installments. 1 year in monthly installments. 1 year in monthly installments.
सेकंड स्टेज पे लोन तभी दिया जाएगा जब फर्स्ट स्टेज का लोन टाइमली रीपे हो गया होगा. सेकंड लोन कैन बी गिवन if first loan repaid in time. If first loan repaid in time. If first loan repaid in time. Amount of loan minimum 15,000 rupees. Minimum 15,000 rupees and maximum rupees 20,000. Maximum rupees 20,000. Loan will be repayable in 18 months. Loan will be repayable in 18 months. Loan shall be repayable in 18 months. थर्ड स्टेज पर लोन तभी देंगे जब सेकंड स्टेज का लोन टाइम पे रीपे हो गया हो. और दूसरी बात, सेकंड लोन को डिसबर्स किए कम से कम 6 महीने हो गए. ऐसा नहीं कि सेकंड स्टेज का लोन लिया 2 महीने बाद फिर से आ गया थर्ड स्टेज का लोन लेने, लोन रिपे कर दिया और फिर से ले लिया. कम से कम 6 months should be lapsed after the disbursal of second loan. So both the conditions should be met. Third loan will be given if second loan repaid in time. If second loan repaid in time, but minimum 6 months lapsed. Minimum 6 months lapsed after disbursal of second loan. After disbursal of second loan. After disbursal of second loan. Loan amount minimum 30,000 rupees and maximum 50,000. Minimum 30,000 rupees and maximum 50,000 rupees. And maximum 50,000 rupees. 50,000 rupees. Repayment of third loan 36 months. Repayment of third loan 36 months. 36 months. 36 months. In this scheme, interest subsidy of 7% is given to the borrower, which is credited to the borrower's account on a quarterly basis. Interest subsidy दी जाएगी जो कि होगी 7% and it will be credited in the borrower's account on a quarterly basis. On a quarterly basis. So this subsidy is available to borrower and this subsidy is available till 31st March 2028. The subsidy is available till 31st March 2028. 31st March 2028. Guarantee cover will be given by CGTMSE. Guarantee cover will be given by CGTMSE. Guarantee fees is nil. Guarantee fees is nil. Neither the bank nor the borrower needs to pay any guarantee fees. Needs to pay any guarantee fees. Only for senior scale participants, you can write maximum guarantee cover, कितना मिलता है, and the effective guarantee cover. In case of first loan, maximum guarantee cover is 50%. Second loan, maximum guarantee cover is 10%. And third loan, maximum guarantee cover is 8%. In case of third loan, maximum guarantee cover is 8%. 8%. 50%, 10%, and 8%. Effective guarantee cover in case of first loan is 31.875%. 31.875%. In case of second loan is 8.25%. 8.25%. And third loan is 6%. Third loan is 6%. Third loan is 6%. As a part of Swanidhi, there is a cash incentive given if the vendor enters into digital transactions. अगर vendor digitally पैसा ले या पैसा दे,
तो उन्हें एलिजिबल डिजिटल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। डिजिटल मतलब अगर यूपीआई से ले या किसी कुछ मेथड से ले, रादर देन ट्रांजैक्टिंग कैश, there is incentive for doing digital transactions. So cash incentive for doing digital transactions, monthly cashback will be available from rupees 50 to rupees 100, from rupees 50 to rupees 100, rupees 50 to rupees 100. Incentive flows like this: rupee 1 cashback, rupee 1 cashback per eligible digital transaction, per eligible digital transaction for first 50 transactions, for first 50 transactions, for first 50 transactions. On next 50 transactions, on next 50 transactions, the cashback will be 0.50 पैसे, यानी 50 पैसे मिलेंगे अगली 50 ट्रांजैक्शंस पे 0.50 रुपीस या 50 पैसा पर ट्रांजैक्शन। एंड नेक्स्ट 100 ट्रांजैक्शंस के लिए, नेक्स्ट 100 ट्रांजैक्शंस he will get 0.25 rupees per transaction, per transaction, per transaction. तो पहली 50 ट्रांजैक्शन करने पर उसको मिलते हैं 50 रुपए, अगली 50 ट्रांजैक्शंस करने पर उसको मिलते हैं 25 रुपए, और अगली 100 ट्रांजैक्शंस करने पर मिलते हैं 25 रुपए। टोटल हो जाते हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज हो जाते हैं। मैक्सिमम लिमिट rupees 1200 will be credited in a year to saving or current account of the borrower. Rupees 1200 will be credited to the saving or current account of the borrower in a year. In a year. Now let's look at Vishwakarma scheme, PM Vishwakarma scheme. PM Vishwakarma scheme. Vishwakarma scheme, the major objective of Vishwakarma scheme was to provide collateral-free, cheap credit to people who are engaged in working with their own hands, tools. 18 trades have been identified. 18 तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए गए, उनमें एंगेज लोग जो हाथ से काम करते हैं या टूल्स की मदद से काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को सस्ती दरों पर और बिना किसी कोलैटरल के लोन प्रोवाइड करवाया जाए। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 17th September 2023. This scheme was launched on 17th September 2023. The scheme is available till 2027-28. The scheme is available till 2027-28. Objective of the scheme is easy access to collateral-free credit, and reduce cost of credit by providing interest subvention. Scheme की कवरेज कहाँ है? रूरल एंड अर्बन एरियाज, both places the scheme applies, with focus on saturating districts, Eligible borrowers, artisans or craftsperson who are working with hands or tools, in unorganized sector, on self-employed basis, and engaged in one of the 18 traditional trades. Unorganized sector में सेल्फ एम्प्लॉयड हो और नीचे दिए गए 18 ट्रेड्स में से किसी ट्रेड में एंगेज्ड हो। ट्रेड्स आर, द लिस्ट विल बी अवेलेबल इन द बुक्स आल्सो। कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, जो हथियार बनाता है आर्मरर,
blacksmith, hammer and tool kit maker, locksmith, sculptor, मूर्ति बनाने वाला, goldsmith, potter, cobbler, masons, then basket maker या broom maker या coir weaver का काम करते हैं जो लोग, then गुड़िया बनाने वाला, doll and toy maker, then comes barber, garland maker, मालाकार, garland maker, washerman और धोबी, tailor and fishing net maker. इसको आप उतारे नहीं, you just put 18 trades and then you can just have a look again from the books. Minimum age 18 years. Minimum age is 18 years. Minimum age is 18 years. Another condition, the person availing loan should not have taken any loan from center or state government in the past 5 years. विश्वकर्मा लोन तभी मिलेगा जब पिछले 5 सालों में किसी तरह की भी सेंटर की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई क्रेडिट बेस्ड स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस हैं। मुद्रा और स्वनिधि के अगर बेनिफिशियरीज हैं, मुद्रा और स्वनिधि के बेनिफिशियरीज अगर अपना लोन टाइम पर रीपे कर चुके हैं तो उन्हें विश्वकर्मा का लोन मिल सकता है, उन्हें मिल सकता है। प्लीज राइट, should not have availed loans under credit based scheme, should not have availed loans under credit based scheme of center or state in past 5 years, should not have availed loans in credit-based schemes of center or state in past 5 years. Exceptions, Mudra and Swanidhi. Exceptions, Mudra and Swanidhi, if the loan has been repaid. One member per family is eligible. One member per family is eligible. And families का definition है यहाँ पर husband, wife and unmarried children. Husband, wife and unmarried children. और विश्वकर्मा खुद गवर्नमेंट सर्विस में हो या उसके परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो तो फिर एलिजिबल नहीं होगा। If the person is in government service, or any of the family members is in government service, if the person is in government service or any family member is in government service, then will not be eligible. स्कीम का इंप्लीमेंटेशन 3 tiers में किया जाता है। 3-tier implementation for this scheme. National Steering Committee, State Monitoring Committee, and District Implementation Committee. National Steering Committee, State Monitoring Committee, and District Implementation Committee. Beneficiaries identification and approval is also a 3-stage process. Beneficiaries will be identified by head of panchayat or administrator of urban local body. पंचायत के मुखिया या अर्बन लोकल बॉडी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर या हेड होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे। They will send the proposal to district implementation committee. The proposal will go to district implementation committee for their verification, vetting, and recommendation. Verification and vetting. After that, it will be approved by screening committee.
It will be approved by screening committee. What are the benefits of Vishwakarma scheme? First is every person, every Vishwakarma will get PM Vishwakarma certificate and ID card. PM Vishwakarma certificate and ID card upon identification. Then skill upgradation will be offered. Basic training and advanced trainings are offered in this. वो देखेंगे अभी बात करेंगे. Then is toolkit incentive. Toolkit incentive. Credit support, we have seen credit support is offered. There is also incentive for digital transactions. Incentive for digital transactions. And then marketing support. And then marketing support. For skill upgradation, the Vishwakarma can join basic training of 40 hours or 5 to 7 days. 5 to 7 days. After completion of basic training, they can join advanced training, which is of 120 hours, 120 hours and 50 days. 120 hours and 15 days. अब ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान वो ट्रेनिंग में आ गया, कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो उन दिनों के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा. स्टाइपेंड will be paid. Stipend will be given during the training days, at the rate of rupees 500 per day, rupees 500 per day, using direct benefit transfer. Toolkit incentive कितना होगा? Toolkit incentive will be for 15,000 rupees. Toolkit incentive will be 15,000 rupees. 15,000 rupees. कब दिया जाता है toolkit incentive? After the skill verification and before start of basic training and at the start of basic training, ताकि वो बाद में toolkit वगैरह दे सके. After skill verification and at start of basic training. Credit support के बारे में देखते हैं. Credit support. Who all are the financial institutions who can participate in Vishwakarma scheme? Practically, most of the institutions are included. Scheduled commercial banks, RRBs, small finance banks, cooperative banks, NBFCs, and microfinance institutions. Total loan will be of rupees 3 lakhs. Total loan will be of rupees 3 lakhs, payable in two tranches. First tranche of 1 lakh and the second tranche of rupees 2 lakhs. Right. Total loan rupees 3 lakhs in two tranches. Total loan rupees 3 lakhs in two tranches. First tranche rupees 1 lakh, payable in 18 monthly installments. Second tranche rupees 2 lakhs, payable in 30 monthly installments. There is no collateral in PM Vishwakarma scheme. किसी भी लोन पर, PM विश्वकर्मा के लोन पर कोई कोलैटरल नहीं लेंगे. Loan shall be given upon
skill verification, upon skill verification and completion of basic training and completion of basic training and completion of basic training. Rate of interest कितना लगेगा? From Vishwakarma borrower, a bank will charge 5% per annum. Rate of interest for the Vishwakarma borrower is 5% per annum. 5% per annum. Government will provide interest subsidy to lenders. क्योंकि वो 5% पे दे रहे हैं, उन्हें interest subsidy दी जाएगी. Interest subvention by government to lenders. Interest subvention by government to lenders at the rate of 8% per annum. At the rate of 8% per annum. Prepayment penalty, it is nil after 6 months of disbursement. Prepayment penalty is nil after 6 months of disbursement. Subvention claims have to be filed on a monthly basis. Subvention claims have to be filed on a monthly basis. Guarantee cover will be provided by CGTMSE. Guarantee cover will be provided by CGTMSE. Maximum guarantee cover in case of first tranche is 50%. It is 50%. And second tranche, it is 15%. 15%. Effective cover in case of first tranche was 35.5%. 35.5%. And in case of second tranche, it is 13%. It is 13%. इसके बाद आइए इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन. विश्वकर्मा स्कीम में क्या इंसेंटिव है डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का? ₹1 per digital transaction up to a maximum of 100 digital transactions in a month. हर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर उसको ₹1 का इंसेंटिव मिलेगा. पर ये इंसेंटिव मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शंस तक लिमिट होता है. In a month, it is limited up to 100 transactions in a month. टाइम है हमारे पास. CGTMSE की बात करते हैं. CGTMSE. The full form of CGTMSE is Credit Guarantee Fund Trust. Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises. 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 इसमें किस तरह की फैसिलिटी कवर की जाएगी? टाइप ऑफ फैसिलिटीज कवर्ड. टाइप ऑफ फैसिलिटीज कवर्ड. Fund based and non-fund based and non-fund based. Fund based and non-fund fund based. Fund based is where a bank has put in their own money. Non-fund based is like BG वगैरह जो है उनके अंदर. Both fund based and non-fund based limits are covered here. Eligible borrowers. Unit should be a micro or small enterprise. Unit should be a micro or small enterprise. Unit should be micro or small enterprise. Loan outstanding up to ₹500 lakhs. Up to ₹500 lakhs. Up to ₹500 lakhs. Udyam registration is mandatory. Udyam registration is mandatory. And under CGTMSE, there is no
maximum loan limit that CGTMSE binds, maximum guarantee is limited to 5 crore rupees. CGTMSE की अगर आपने गारंटी दी तो आप लोन 5 करोड़ से ज्यादा का दे सकते हैं, लेकिन सीजीटीएमएससी की गारंटी का कवर 5 करोड़ रुपए तक ही दिया जाएगा. No maximum loan limit. However, maximum guarantee cover will be rupees 5 crore per borrower. Rupees 5 crores per borrower. Loan should have been given without any security, collateral security, without any collateral security or third party guarantee. Except in case of hybrid product. What is a hybrid product? Hybrid product क्या है? जब एक borrower को थोड़े पोर्शन के लिए तो वो अपनी कोलेट्रल दे सकता है और बाकी का बचा हुआ अनसिक्योर्ड पोर्शन जो रह जाता है उसके लिए हम गारंटी, उसने मान लीजिए 100 का लोन लिया था, उसमें से 30 का वो कोलेट्रल ले आया, तो जो बाकी का बचा हुआ 70 है उस पर हम क्रेडिट गारंटी ले. क्रेडिट गारंटी in case of CCOD, initial coverage is for 5 years. Initial coverage for 5 years. Wholesale trade and educational or training institutes are also included. Guarantee fees. This is the only scheme where guarantee fees is divided in 3 parts. Standard rate, then risk premium, and the third is discount. अब इसकी बात करेंगे हम. Annual guarantee fees has 3 components. Standard rate, risk premium, and discount. Standard rate, risk premium, and discount. Fees will be charged annually. Annual guarantee fees in first year. It will be applicable on guaranteed amount. However, from second year and onwards, the guarantee fees will be applicable. On the outstanding amount. Outstanding amount कैसे निकलेगा? In case of term loan, outstanding amount will be as on 31st December of every year. In case of CCOD, maximum amount availed during 1st January to 31st December. Between 1st January to 31st December. अब सबसे पहले वाले कंपोनेंट की बात करेंगे, स्टैंडर्ड रेट ऑफ गारंटी फीस. इफ द लोन इज अप टू रुपीज 10 lakhs, लोन यदि 10 लाख रुपए तक है तो स्टैंडर्ड रेट होगा गारंटी फीस का 0.37%. If the loan amount is more than 10 lakh rupees,
and up to rupees 50 lakhs, up to rupees 50 lakhs, then the fees will be 0.55 lakhs. If the amount is above 50 lakhs and up to rupees 1 crore, if the amount is more than rupees 50 lakhs and up to rupees 1 crore, then the fees will be 0.60%. 0.60%. If the loan amount is above rupees 1 crore and up to rupees 2 crores, up to rupees 2 crores, the guarantee amount, guarantee percentage will be 1.20%. Will be 1.20%. यदि लोन 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक हो, for loan above rupees 2 crores and up to rupees 5 crores, 1.35%. 1.35%. 1.35%. एक फुल फॉर्म लिख लीजिए, ICDD. ICDD is Identified Credit Deficient Districts. Identified Credit Deficient Districts. Credit Deficient Districts. Right. अब हमने बात की स्टैंडर्ड रेट, अब डिस्काउंट की बात करेंगे. डिस्काउंट इज अवेलेबल इन 3 कैटेगरीज, सोशल कैटेगरी, ज्योग्राफिक और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का कैसा स्टेटस है. तो वी विल क्रिएट अ टेबल लाइक दिस. कैटेगरी, then social category is the first category, geographic category, and status of micro and small enterprise. फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं विमेन, SC/ST, persons with disabilities and Agniveers. Women, SC/ST, persons with disabilities and Agniveers. Geographic में, if the unit is located in northeastern region, Sikkim, J&K, Ladakh, इन सब पे up to a loan of rupees 50 lakhs, up to rupees 50 lakhs, up to rupees 50 lakhs. और अगर यूनिट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड हो, और स्टेटस का मतलब है Z सर्टिफाइड. अगर यूनिट Z सर्टिफाइड, concession will be 10% in each category. Concession will be 10% in each category. अब किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के पास दोनों कैटेगरी में था, वो विमेन ने भी लगाई थी, और यूनिट जो थी किसी हिल स्टेट में, किसी लद्दाख में, J&K में वहां लगी थी, तो दोनों कैटेगरीज में आ गया. देखिए, micro and small enterprise falling in all of the above 3 categories. Micro and small enterprise falling in all of the above 3 categories. Maximum discount is 30%. Maximum discount is 30%. Maximum discount is 30%. Z सर्टिफाइड का मीनिंग होता है जीरो एमिशन जीरो डिफेक्ट. जीरो एमिशन जीरो डिफेक्ट.
अब कुछ बैंक हैं जो क्लेम ज्यादा ही लेते रहे, जो जितनी फीस जमा करवाते थे उसके डबल से ज्यादा क्लेम लेते रहे। पिछले 5 सालों में से 3 सालों में उन्होंने ऐसा क्लेम लिया है, तो उनके लिए क्या होगा? एडिशनल रिस्क प्रीमियम, एडिशनल रिस्क प्रीमियम at the rate of 15% will be charged on applicable rate to banks, will be charged on applicable rate to banks who exceed payout threshold limit of payout threshold limit of 2 times more than thrice in the last 5 years. More than thrice in the last 5 years. Payment of fees, डिसबर्समेंट किए जाने के 30 दिन के अंदर या डिमांड नोटिस मिलने के डिमांड नोटिस मिलने के बाद तब दिया जाएगा, विच एवर इज लेटर. सो विद इन 30 days of first disbursement or demand whichever is later. और अगर पेमेंट ऑफ फीस करने में कोई डिले किया या कोई शॉर्टफॉल किया तो पेनल्टी लगेगी एट बैंक रेट प्लस 4%. एट बैंक रेट प्लस 4%. In case of any shortfall or delay, penal interest will be charged. At the bank rate plus 4%. At bank rate plus 4%. अब गारंटी कवर कितना मिलता है? In case of micro units, for loans up to rupees 5 lakhs, the guarantee cover is 85%. For loans more than rupees 5 lakhs, the guarantee cover is 75%. It is 75%. For micro and small enterprises, in northeastern region, J&K, Ladakh, this will include, northeastern region will include Sikkim. If loan up to rupees 50 lakhs, then 80%. And more than 50 lakhs, 75%. अब बात आती है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज. अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया हो, अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लगा हो, SC/ST ने लगाया हो, विमेन ने लगाया हो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने लगाया हो, अग्निवीर ने लगाया हो, या ZMSC हो, तो गारंटी कवर मिलेगा 85%. तो गारंटी कवर विल बी 85%. And in all other cases, guarantee cover will be 75%. Guarantee cover in all other cases will be 75%. अब बात आती है जो ICDD थे, आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स.
सो उनका गारंटी कवर जो ऊपर कैटेगरीज दी गई हैं उनके गारंटी कवर से 5% ज्यादा होगा। तो अगर पॉइंट नंबर सी में गारंटी कवर आया था 85%, तो आईसीडीडीज को, आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स को 5% एडिशनल गारंटी कवर मिलेगा, 5% एडिशनल गारंटी कवर मिलेगा। इन आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स, in identified credit deficient districts, guarantee cover will be increased. Guarantee cover will be increased by 5%, by 5%, over and above the guarantee coverage applicable, over and above the guarantee coverage applicable. Claim payment. 75% claim to be paid within 30 days. Within 30 days of receiving claim form. Of receiving claim form. अब ट्रस्ट के पास पैसे जमा कराने में देरी की तो ट्रस्ट पीनल इंटरेस्ट लगाएगा। फॉर डिले ट्रस्ट विल पे इंटरेस्ट एट बैंक रेट। अगर ट्रस्ट से पैसे आने में देरी हुई तो वो बैंक रेट पर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। बैलेंस अमाउंट कब पे करना है? 75% के अलावा जो बैलेंस अमाउंट है वो कब पे करना है? ऑन कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, ऑन कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, और 3 years from the date of decree, or 3 years from the date of decree, whichever is earlier, or 3 years from the date of decree, whichever is earlier, whichever is earlier. And threshold for waiver of legal action. CGTMSC requires that the claim will be paid only after you have taken legal action for recovery of claims. पर अगर 10 लाख रुपए तक हो क्लेम का तो फिर लीगल एक्शन लेना जरूरी नहीं है। थ्रेशोल्ड फॉर वेवर ऑफ लीगल एक्शन ₹10 lakhs पर क्लेम, ₹10 lakhs पर क्लेम, ₹10 lakhs पर क्लेम, ₹10 lakhs पर क्लेम। रिकवरी आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्लेम, क्लेम का पेमेंट हो गया उसके बाद रिकवरी हुई तो आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ रिकवरी बैंक विल हैव टू डिपॉजिट प्रो रेटा अमाउंट विद सीजीटीएमएससी। जितना परसेंटेज आपका क्लेम का बनता था उसमें से जितना परसेंटेज उन्होंने दिया, क्योंकि वो पूरा तो देते नहीं है, परसेंटेज टर्म्स में गारंटी कवर देते हैं, उतना परसेंटेज रिकवरी का आप वहां डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ रिकवरी, आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ रिकवरी, after deducting cost of recovery, amount to be shared pro rata, amount to be shared pro rata in the ratio of claim payment, in the ratio of claim payment, in the ratio of claim payment. If sharing of recovery is delayed, recovery जमा कराने में देरी कर दी गई, beyond 30 days, then bank has to pay interest at bank rate plus 4%. Then bank has to pay interest at bank rate plus 4%. Then bank has to pay interest at bank rate plus 4%. Bank rate plus 4%. स्कीम का लॉक इन पीरियड कितना है? कितने पीरियड तक आप क्लेम नहीं फाइल कर सकते हैं? लॉक इन पीरियड इज 18 months. लॉक इन पीरियड इज 18 months from the date of final disbursement.
from the date of final disbursement or payment of first guarantee fees or payment of first guarantee fees. जब फाइनल डिसबर्समेंट हुई थी या जब पहली बार गारंटी फीस जमा की गई थी वहां से 18 महीने, दोनों में से जो भी बाद में आए, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। और अगर अब एक कंडीशन रखी गई कि अगर लोन 10 लाख रुपए तक का है और रीपेमेंट पीरियड 36 महीने का है यानी 3 साल का है, तो लॉक इन पीरियड 9 मंथ्स का हो जाएगा। तो लॉक इन पीरियड 9 मंथ्स का हो जाएगा। लॉक इन पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड टू 9 months. It will be reduced to 9 months if loan amount is up to rupees 10 lakhs. If loan amount is up to rupees 10 lakhs and repayment period is up to 36 months. If repayment period is up to 36 months. And repayment period is up to 36 months. मैक्सिमम पीरियड फॉर लॉजिंग द क्लेम, कितने टाइम तक क्लेम लॉन्च किया जा सकता है? अगर अकाउंट लॉक इन पीरियड के बाद में एनपीए बनता है तो फिर एनपीए बनने के 3 साल तक फाइल कर सकते हैं। इफ अकाउंट बिकेम एनपीए आफ्टर लॉक इन पीरियड, इफ अकाउंट बिकम्स एनपीए आफ्टर लॉक इन पीरियड, then 3 years from the date account became NPA, जिस दिन वो NPA बना था वहां से 3 साल तक, वहां से 3 साल तक। And if account became NPA during the lock-in period, अगर खाता लॉक इन पीरियड के दौरान NPA बन जाए तो 3 years from the expiry of lock-in period, 3 years from the expiry of lock-in period, 3 years from the expiry of lock-in period. 3 years from the expiry of lock-in period. गारंटी कितने टाइम के लिए दी जा सकती है? इट कैन बी गिवन फॉर 5 years और ब्लॉक ऑफ 5 years और ब्लॉक ऑफ 5 years। और रिपेमेंट पीरियड अगर टर्म लोन के केस में जितना रिपेमेंट पीरियड है अगर वो उससे कम है तो वहां तक। कैप ऑन क्लेम सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट पर कितना क्लेम मैक्सिमम सीजीटीएमएससी सेटल करेगी? मैक्सिमम अमाउंट पेड इन अ ईयर, maximum amount paid in a year is up to 2 times of fee, up to 2 times of fee plus recovery remitted by the bank in previous year, in previous year, in previous financial year। जितनी फीस बैंक ने इस साल जमा की है उसका 2 गुना, up to 2 times of fees plus any recovery which was remitted in the previous year, उन दोनों को टोटल कर लीजिए, मैक्सिमम उतने तक का क्लेम सीजीटीएमएससी देगी एक साल। अभी एक इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है सीजीटीएमएससी ने। सो स्पेशल प्रोविजन फॉर इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस आर एंटरप्राइजेस व्हिच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी रिजीम। उनको जीएसटी का नंबर नहीं होता उनके पास, इसलिए वो क्या करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना उद्यम सर्टिफिकेट, जो उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पे जाकर वहां पर सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं उन एंटरप्राइज के लिए। दे शुड बी रजिस्टर्ड ऑन उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, द यूनिट शुड बी रजिस्टर्ड ऑन उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म।
maximum loan up to rupees 20 lakhs, maximum loan up to rupees 20 lakhs, and guarantee fees is for loan up to rupees 10 lakhs, 0.37%, 0.37%. And loan above rupees 10 lakhs, 0.45%, 0.45%. 10 लाख रुपए तक के लोन पर 0.37% और 10 लाख रुपए से ज्यादा के लोन पर 0.45%, 0.45%, 0.45%. Guarantee cover 85%. Guarantee cover is 85%. Guarantee cover is 85%. Guarantee cover is 85%. एक तो क्रेडिट लिमिट का गारंटी स्कीम्स और है, छोटी छोटी, वो और कर लेते हैं. Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Caste. Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Caste, CEGSSC. Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Caste, CEGSSC. The sponsoring agency of this scheme is Ministry of Social Justice and Empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment. And nodal agency for this scheme is IFCI, Industrial Finance Corporation of India, IFCI. Eligible accounts, loans given to companies, societies, registered partnership firms. पहले ये registered word नहीं था, अब include किया गया. Registered partnership firms, sole proprietorship firms, or individuals. तो इसमें कौन लोग इंक्लूडेड हैं? जो इंडिविजुअल्स हैं या सोल प्रोप्राइटर्स हैं, वो सब शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन से होने चाहिए. इन केस ऑफ दिस कंपनी, सोसाइटीज, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स, more than 51% shareholding, by scheduled caste members, with management control for past 6 months, with management control for past 6 months, with management control for past 6 months, with management control for past 6 months. For past 6 months. Amount of guarantee cover. If the loan is between 15 lakhs to 1 crore, अगर लोन 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, तो गारंटी कवर होगा 100%. गारंटी कवर होगा 100%. मिनिमम कवर 0.15 करोड़ एंड मैक्सिमम कवर 1 crore. Maximum cover 1 crore. If the loan is between 1 crore to 2 crores, 1 crore to 2 crores, then guarantee cover is 80%. Minimum cover 1 crore. Minimum cover 1 crore क्योंकि 1 करोड़ तो यहीं पर कवर हो जाता है. And maximum cover 1.6 crores. 1.6 crores. अगर लोन 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है, अगर लोन 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, तो गारंटी कवर होता है 70%. मिनिमम कवर 1.6 करोड़, जो यहां पे था ना, ये वाला यहां आता है, क्योंकि 2 करोड़ तक था तो वही लग जाता है. एंड मैक्सिमम कवर इज 3.5 करोड़.
Maximum cover is 3.5 crores. 3.5 crores. In case of loans more than 5 crore rupees, in case of loans more than 5 crore rupees, guarantee cover 60%, guarantee cover 60%, minimum cover 3.5 crores, minimum cover 3.5 crores, and maximum 5 crores, maximum 5 crore. लोन 5 करोड़ से ऊपर जा सकता है, लेकिन कवर 5 करोड़ तक ही मिलेगा, कवर 5 करोड़ रुपए तक का ही मिलेगा। गारंटी फीस कितनी होगी? गारंटी फीस इन केस ऑफ लोन अमाउंट अप टू 1 करोड़ रुपीस, लोन अमाउंट अगर 15 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, तो जनरल कैटेगरी में 0.20% और विमेन या डिसेबल्ड हैं, विमेन या डिसेबल्ड हैं तो 0.1%, 0.1%, तो 0.1%। In case of loan more than 1 crore rupees, in case of loan more than 1 crore rupees, overall the fees is 0.75%, 0.75%, and women या disabled category में 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%। कवरेज के लिए रिपोर्टिंग कब करनी है? Within 30 days from the date of first disbursement. Within 30 days from the date of first disbursement. Within 30 days from the date of first disbursement. एक ये छोटा सा है क्रेडिट गारंटी स्कीम, चलिए अगली क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं, सेशन इसको अगले में कर लेंगे। We can take a break of 10 minutes now. We can take a break of 10 minutes now. मैंने आपको वो फैक्ट बेस बताया जैसा वहां स्कीम में लिखा है, वहां पर 14.99 लाख नहीं लिखा है, वहां पर जिस तरह से लिखा है उसी तरह से कवर करना है। Let's break for 10 minutes and then we will join again.